फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एक्सियोम 4 मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं एक्सियोम 4 मिशन के थ्रू, और ये एक बिग स्टेप फॉरवर्ड होगा इंडिया की स्पेस जर्नी में। शुक्ला की जो स्पेस फ्लाइट है वो इंडिया का ओन ह्यूमन स्पेस मिशन तो नहीं है, लेकिन अभी भी ये हमारे प्लान्स के साथ अलाइन कर रहा है और ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देगा अपकमिंग गगनयान मिशन के लिए और फ्यूचर स्पेस प्रोजेक्ट जो इसरो आगे भेजने वाला है। तो आपको याद होगा कि राकेश शर्मा की जर्नी शुरू हुई थी 1984 में, जो कि एक प्राउड मूवमेंट था इंडिया के लिए। लेकिन उस समय पर इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो है बहुत यंग था, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे पास कोई क्लियर लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्लान नहीं था। तो उसकी वजह से जो है, अगर हम वो जर्नी माने तो वो सिर्फ एक सिम्बॉलिक थी रादर दैन प्रैक्टिकल। अब जो शुभांशु शुक्ला का मिशन है वो सिर्फ इंस्पिरेशनल ही नहीं है, बल्कि वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देगा, डेटा देगा हमें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, खासकर गगनयान मिशन के लिए। जो गगनयान मिशन इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जो कि फार मोर कॉम्प्लेक्स है दैन अनक्रूड मिशंस, क्योंकि इसमें तो ऑफ कोर्स हम ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसमें जो है डिफ़िकल्टी हो जाती है इसरो के लिए, क्योंकि उन्हें एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है स्पेस में फॉर द फर्स्ट टाइम। शुभांशु शुक्ला जो कि पायलट हैं एक्सियोम 4 मिशन के, उन्हें रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि इनवैल्यूएबल होगा गगनयान के लिए। अब उनका जो हैंड्स ऑन लर्निंग होगा डिसीजन मेकिंग में, वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा ऑर्बिटल नेविगेशन में, स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशंस में। तो उनको जो है रियल वर्ल्ड इंसाइट्स मिलेंगे जो कि हम सिमुलेशंस में उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो शुक्ला जो है वो फर्स्ट इंडियन बनेंगे जिन्होंने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे। इस उनका जो टाइम है अबाउट दी ISS, वो उन्हें की ऑब्जर्वेशंस प्रोवाइड करेगा कि कैसे स्पेस स्टेशंस फंक्शन करते हैं। शुक्ला का जो 2 वीक स्पेस मिशन है वो ग्राउंड वर्क भी ले करेगा इंडिया का फ्यूचर स्पेस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने का। एक्सियोम 4 मिशन मार्क करता है इसरो का पहला चांस टू कंडक्ट स्पेशली डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। तो अगर हम देखें तो ज़ीरो ग्रेविटी या मसल बिहेवियर स्टडी की जाएगी स्पेस में। इसरो जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा मूंग दाल स्प्राउट्स और माइक्रो एल्गे पर भी अपने गगनयान मिशन पर। तो शुभांशु शुक्ला की जो स्पेस फ्लाइट है ये एक तरह से रोड मैप बन रहा है इंडिया के ह्यूमन मून मिशन का भी, जो 2040 तक भेजने का हमारा प्लान है। तो ऐसे एम्बिशियस गोल्स रखे हैं इंडिया ने, तो उसके लिए एक रॉबस्ट स्पेस इकोसिस्टम होना ज़रूरी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन हो, ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके, इनोवेशन ड्राइव की जा सके और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी स्पीड अप हो सके और टैलेंट भी ऑफकोर्स अट्रैक्ट हो सके। ग्लोबल स्पेस मार्केट लगभग $500 बिलियन की है। उसमें से इंडिया जो है अभी सिर्फ 2% शेयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर कैप्चर कर रहा है। उसको जो है वो बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो जैसे शुक्ला का जो ये मिशन है, इससे यंग माइंड्स भी इग्नाइट होंगे, वो भी जो है स्पेस की जर्नी की तरफ जो है वो अपना फोकस रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया टू ऐड 75 गीगावाट ग्रीन पावर बाय 2027। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है प्रोजेक्टेड है कि वो 75 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी ऐड करेगा अगले 2 साल में। तो सब ये एक 53% इंक्रीज़ है अगर हम इसको देखें पिछले साल के हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट्स भी जो है वो लगभग 52% बढ़ेंगी। अगर हम 2024 का आंकड़ा देखें अक्टूबर 2024 तक का, तो इंडिया की जो टोटल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 201 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो इंडिया का जो टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर है वो लगभग 50% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है। ठीक है, तो इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो लगभग 452 गीगावाट है, जिसमें रीन्यूएबल्स लगभग 46% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम्बिशियस गोल रखा है 500 गीगावाट का ऑफ इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बाय 2030। 100% FDI भी अलाउ कर दी गई है इसमें रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर। अब आपको पता होगा कुछ नेशनल स्कीम्स भी चलती हैं, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PM कुसुम, PM सूर्य घर योजना, फिर PLI स्कीम फॉर सोलर PV मॉड्यूल्स। ये सब जो है रीन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अल्ट्रा मेगा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क्स भी प्रोवाइड करने का प्लान है। फिर ट्रांसमिशन प्लान है 2030 तक का ग्रिड रेडीनेस के लिए। और इंडिया जो है लगभग 75 गीगावाट जो है वो ऐड करेगा रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अगले 2 साल में। और इससे इंडिया की जो टोटल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 233 गीगावाट पहुंच जाएगी मार्च 2027 तक। इन्वेस्टमेंट जो है रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वो भी जो है ग्रो होकर 2.5 लाख करोड़ जो थी वो 3.8 लाख करोड़ पहुंच जाएंगी, जो कि एक 52% जंप होगा अगले 2 साल में।
और कैपिटल इंटेंसिव हाइब्रिड और स्टोरेज लिंक्ड प्रोजेक्ट्स में जो शेयर इंक्रीज हो रहा है ये उसको दिखाता है। तो लगभग 37% जो अपकमिंग 75 गीगावाट की कैपेसिटी है वो हाइब्रिड और स्टोरेज लिंक प्रोजेक्ट से आएगी। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या करते हैं, सोलर और विंड को कंबाइन कर देते हैं ताकि कंसिस्टेंट पावर जनरेशन हो, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो अभी इंटरमिटेंट है, मतलब सोलर जो है वो दिन के टाइम पर ही काम करता है, विंड जो है वो सीजनल रहता है। तो इसलिए इनका शेयर इंक्रीज करेंगे तो ग्रिड स्टेबिलिटी को डिसरप्शन हो सकती है। तो हाइब्रिड और स्टोरेज सोल्यूशन जो है वो राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई और ग्रिड बैलेंस बनाने के लिए हेल्पफुल है। ट्रांसमिशन भी एक मेजर चैलेंज है। तो अभी तक अगर हम देखें तो जो डिस्कॉम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कीन नहीं रहती हैं पावर परचेज एग्रीमेंट्स करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी में, लेकिन जैसे जैसे पावर की डिमांड बढ़ेगी तो रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस भी जो है वो ग्रो होती रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कैपेसिटी एडिशन जो प्लान है वो हम यहाँ पर आंकड़ों से देख सकते हैं कि सोलर जो है वो अभी भी सबसे ज़्यादा ही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यू सेट ऑफ डेटा आ रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, जो कि शो करता है कि 86.5 लाख डेथ्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं कंट्री में 2022 में, जो कि सब्सटेंशियली लोअर हैं दैन द पीक ऑफ 2021। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, इसको पॉपुलरली हम बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें वाइटल इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ, और ये स्टेचुटरी प्रोविजंस के अंडर रिकॉर्ड होता है। तो इसको जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 के अंडर जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, उसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन होती है ताकि यूनिफॉर्मिटी और कंपेरेबिलिटी आ सके रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स और डेथ्स के अक्रॉस द कंट्री। सीआरएस जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो डेटा जो है ऑब्टेन करते हैं ऑन द कॉजेज ऑफ डेथ फ्रॉम चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एड्रेस किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब ये कोalition जो है 2019 में बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट्स की, यूएन एजेंसीज़ की, प्रोग्राम्स की, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की, प्राइवेट सेक्टर की और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की। एम है कि प्रमोट हो सके रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स ताकि क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क जो हैं उनको हम रेजिलिएंट बना सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। तो इसका जो है 2050 तक का गोल है कि लगभग $10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो न्यू और एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं और सर्विसेज जो हैं उनको हम रेजिलिएंट बनाएं नेचुरल हैज़र्ड्स और क्लाइमेट चेंज से। तो इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लाइवलीहुड्स देना, ओवरऑल वेलबींग इंश्योर करना, मोर देन 3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, ये भी इसका गोल है। और इसकी फंडिंग जो है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से होती है और 46 मेंबर कंट्रीज इसके करंटली मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक्सपर्ट्स ने कंसर्न्स रेज किए हैं कंस्ट्रक्शन वर्क पर जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर चल रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश में। कहा है कि इससे सिवियर इम्पैक्ट होगा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को इनसाइड द रिजर्व। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसमें सरप्लस वाटर जो है केन रिवर का वाटर स्कार्स बेतवा बेसिन में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाने वाला है। दोनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन में। फ़ेज़ 1 जो है उसमें दौड़ान डैम जो है बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और ये प्रोजेक्ट जो है वो हाइड्रो पावर और सोलर पावर भी जनरेट करेगा। फ़ेज़ 2 में जो है लोअर और डैम, कोथा बराज और बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बनाए जाएंगे ताकि वाटर अवेलेबिलिटी एनहेंस हो सके। और एक सिग्निफिकेंट कंसर्न ये है कि पन्ना टाइगर रिजर्व पर इसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि लगभग 6000 हेक्टेयर्स का जो कोर एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन, जिससे कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स अफेक्ट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुंभाभिषेकम किया गया है अभी रिसेंटली श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में तिरुवनंतपुरम में आफ्टर 270 ईयर्स। तो ये जो टेम्पल है हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है और इसका हम सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत कहते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो है वो इसका 8th और 9th सेंचुरी का आता है, लेकिन टेम्पल इससे भी पुराना है। तो ये टेम्पल जो है वो बिल्ट और रीबिल्ट हुआ है ओवर द सेंचुरीज। जो रिसेंट वाला टेम्पल है ये मार्तंड वर्मा जो थे किंग ऑफ त्रावणकोर ने 1750 में जो है टेम्पल बनाया था। तो ये टेम्पल जो है ब्लेंड है
केरला और द्रविडियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर का। आइडल जो है विष्णु का वो अनंत शयनम पोस्चर में है, मतलब कि यौगिक रेस्ट पोस्चर है विष्णु का। और एक 7 टियर हाई गोपुरम है यहाँ पर। 3 मिलियन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि लगभग 14th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। 2011 में ये टेम्पल जो था इंटरनेशनल न्यूज़ में आया, क्योंकि यहाँ के जो है वॉल्ट्स खोले गए और वेल्थ ऑफ ज्यूल्स, प्रेशियस मेटल्स और अदर ट्रेजर्स मिले, और कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हींग। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो फर्स्ट फ्लावरिंग और सीड ऑफ हींग है वो रिपोर्ट किया गया है CSIR द्वारा, जिसको सक्सेसफुली इंडिया में कल्टीवेट किया गया है। तो ये एक पेरेनियल प्लांट होता है हींग, जो लगभग 5 साल या से भी ज़्यादा लेता है मैच्योर होने में और फ्लावरिंग होने में। कोल्ड एरिड इन्वायरमेंट्स में थ्राइव करता है, खासकर जो नेटिव रीजन्स हैं ईरान और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के। ये प्लांट प्रेफर करता है सैंडी वेल ड्रेन्ड सॉइल विद लो मॉइस्चर। आइडली इसको एनुअल रेनफॉल 200 मिलीमीटर या उससे कम चाहिए होती है। फ्लरिश होता है ये टेम्परेचर्स ऑफ 10 to 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हींग का, वो एसफर्टिडा जो प्लांट है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इंडिया जो है अभी तक डिपेंडेंट रहा है इम्पोर्ट्स ऑफ फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Axiom 4 mission. This topic is important for your science and tech section. So Indian astronaut Shubhanshu Shukla's trip to the International Space Station on the Axiom 4 mission will be a big step forward for India's space journey. Shukla's space flight is not India's own human space mission yet, but it will be closely linked to our plans. Why? Because it will give us useful information on for the upcoming Gaganyaan mission and also future space projects. We all know that Rakesh Sharma's journey to space began in 1984, and it was a proud moment for India and it sparked public imagination. But at that time, India's space program itself was very young and it had limited infrastructure and no clear long term human spaceflight plans. So it was more of symbolic than practical. But now, Shubhanshu Shukla's mission is not just inspirational, but it will also provide valuable experience and data for future projects, especially for the upcoming Gaganyaan mission, which is scheduled or which is planned at least for 2027. So India's first human spaceflight mission, Gaganyaan, is far more complex than uncrewed missions because of the safety protocols and human factors involved. So this would add layers of difficulty for ISRO as well, because it plans to send astronauts into space for the first time. So Shubhanshu Shukla, as the pilot of Axiom 4 mission, will gain real-time experience, which is invaluable for Gaganyaan. His hands-on learning in decision-making, orbital navigation and spacecraft operations will also bring real-world insights which cannot be replicated in simulations. He will become the first Indian to visit the International Space Station, and his time aboard the ISS will provide him with key observations about how space stations function. Shukla's 2 week space mission will lay the groundwork for developing India's future space capabilities also. So Axiom 4 mission marks ISRO's first chance to conduct specially designed experiments in space, laying the groundwork for future space research tied to India's needs. One key biology experiment focuses on understanding muscle degradation in zero gravity. Okay, and ISRO will also be conducting experiments on moong dal sprouts and microalgae, which is designed to explore space agriculture and food sustainability. So Shubhanshu Shukla's spaceflight marks the beginning of a roadmap which aims for an Indian human moon mission by 2040. And to achieve this ambitious goal, India needs a robust space ecosystem with active private sector participation. This will lower costs, drive innovation, speed up technology development, and it will also attract talent. The global space market is valued at $500 billion and it is expected to double by 2030. Despite ISRO's global standing, India currently holds just about 2% share, which we have a goal to raise this at least to 10%. Events like Shukla's mission can ignite young minds, especially school children, and it will encourage them to pursue careers in space. So the next topic is India to add 75
gigawatt green power by 2027. This topic is important for your environment section. So India is projected to add 75 gigawatt of renewable energy in financial year 2026 and 27, which will be about 53% rise from the 49 gigawatt which was added in the previous year. So investments are expected to grow by 52% as well. As of October 2024, India's total renewable energy capacity has reached 201 gigawatt, and this achievement highlights India's commitment to reducing fossil fuel dependence and building a sustainable energy future. So, India's total non-fossil fuel-based power now makes up about 50% of its installed electricity generation capacity, positioning the country as a global leader in clean energy. India's total electricity generation capacity stands at about 452 gigawatt, with renewables contributing 46% of it. Government of India has also an ambitious goal of achieving 500 gigawatt of installed non-fossil fuel electric capacity by 2030. So for that, we have flagship renewable energy schemes like National Green Hydrogen Mission, PM Kusum, PM Surya Ghar Yojana, PLI schemes, and 100% FDI has also 100% FDI has also been opened under the automatic route for renewable energy. Ultra mega renewable energy parks have also been opened up for to provide land and transmission. Transmission plan till 2030 is also in place for grid readiness. Green energy open access rules 2022 aims to ease access for renewable power buyers. Okay, so India will add this 75 gigawatt in the next 2 years, and this will add country's total renewable energy capacity to 233 gigawatt by March 2027. Investments will also jump almost 52% in the next 2 years, and this will be driven by the increasing share of capital intensive hybrid and storage linked projects. Around 37% of the upcoming 75 gigawatt capacity will come from the hybrid and storage linked projects, and hybrid projects combine solar and wind to ensure more consistent power generation, while the storage linked projects use batteries or pumped hydro to store excess energy. As renewable power is intermittent, that is solar during the day and wind being seasonal, increasing its share can disrupt grid stability. So hybrid and storage solutions help maintain round the clock power supply and grid balance. As of now, even the state discoms are not very keen to enter into renewable energy power purchase agreements, but as the power demand will grow, and the state discoms will be forced to enter into more contracts because of the demand. Okay, and as per a recent Grid India resource adequacy report, the country will add 45 gigawatt in the ongoing financial year. Okay, of course led by solar only. So the next topic is civil registration system. This topic is important for your governance section. So a new set of data from the civil registration system shows that about 86.5 lakh deaths were registered in the country in 2022, which is substantially lower than the peak of 2021. So civil registration system is popularly known as the birth and death registration system. It is the recording of vital events like birth, death, and stillbirth under the statutory provisions of the Central Act named Registration of Births and Deaths Act of 1969. The aim of this act is to promote uniformity and comparability in the registration of births and deaths across the country. CRS falls under the concurrent list, and the Office of Registrar General of India obtains data on the causes of death from the Chief Registrar of Births and Deaths of several states and union territories. Okay, so the next topic is Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. This topic is important for your environment section. So recently, PM Modi has addressed the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure, and this coalition was established in 2019 under the leadership of Government of India and with the support of the United Nations Office for Disaster Risk Reduction. So it's a multi-stakeholder global partnership of national governments, UN agencies and programs, multilateral development banks, private sector and academic institutions. The aim is to promote the resilience of infrastructure systems to climate and disaster risks so as to ensure sustainable development. It seeks to rapidly expand the development and retrofit of resilient infrastructure to respond to sustainable development goals. Okay, by 2050, the aim is to drive US
$10 trillion of new and existing infrastructure investments and services to be resilient to natural hazards and climate change. And aim is also to improve environmental quality, livelihoods, and overall well-being for more than 3 billion people worldwide. So it is funded by voluntary contributions from member countries and organizations, and it currently consists of 46 member countries and 8 partner organizations. Of course, its headquarters is in Delhi only. So the next topic is Ken Betwa Link Project. This topic is important for your environment section. Experts have recently flagged concerns over the construction work of the for the Ken Betwa river linking project going on in the Panna Tiger Reserve in Madhya Pradesh, citing a severe impact on the wildlife population inside the reserve. So this Ken Betwa Link project is a river interlinking project designed to transfer surplus water from the Ken River to the water-scarce Betwa Basin, both tributaries of the Yamuna. It is expected to bring prosperity to the drought-prone Bundelkhand region. Phase 1 of the project involves the construction of Dodhan Dam in Madhya Pradesh. The project will also generate 103 megawatt of hydropower and 27 megawatt of solar power. The second phase of the project includes the Lower Orm Dam, Kotha Barrage, and Bina Complex. But the significant concern is the impact on Panna Tiger Reserve, because about 6,000 hectares of this core area will be submerged due to the dam construction, affecting wildlife habitats. So the next topic is Sri Padmanabha Swami Temple. This topic is important for your art and culture section. So a Mahakumbhabhishekam was recently performed at the famed Sri Padmanabha Swami Temple in Thiruvananthapuram after 270 years. So this is a Hindu temple dedicated to Lord Vishnu, located in Thiruvananthapuram. Thus, name of the city translates to the city of Lord Ananta. So the earliest recorded mention of this temple is from 8th or 9th century, but the temple is very old. The temple was built and rebuilt over the centuries, and the most recent one was built by Martand Verma, the king of Travancore, in 1750. So this temple is a blend of Kerala and Dravidian styles of architecture. The idol of Vishnu is in the Ananta Shayanam posture, that is the eternal yogic rest posture on his serpent Adiseshan. So it has a 7-tier high gopuram. The temple has around 3 million palm leaf manuscripts dating back to 14th century. In 2011, the temple was subject of international news when the exploration of its vaults revealed a wealth of jewels, precious metals, and other treasures. It is also widely believed to be the world's richest temple. So the next topic is Hing. This topic is important for your environment section. Recently, the first flowering and seed set of Hing was reported by CSIR, showing that Hing can indeed be successfully cultivated in India. So Hing is a perennial plant which typically takes 5 years to mature and start flowering. It thrives in cold, arid environments suited to the native regions of Iran, Afghanistan, and Central Asia. So this requires sandy, well-drained soil with low moisture. It ideally requires annual rainfall of 200 millimeter or less. It flourishes in temperatures of 10 to 20 degrees Celsius. The final product of Hing is obtained from the plant Asafoetida, which is derived from oleogum resin extracted from the plant's thick, fleshy taproot and rhizome, which makes about 40 to 64% of the dried gum. India is still dependent on imports from Afghanistan, Iran, and Uzbekistan for Hing. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.